नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। वेलकम टू आदिल बोलता है। आज मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर कासिम चिमथानावाला भी है आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। और 3-4 चीज़ मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो हमारा अगस्त में 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त हमारी इंटर्नशिप प्रोग्राम चालू होने वाला है शाद हॉस्पिटल ऑपोजिट दितवारी रेलवे स्टेशन नागपुर। अगर आप इंटरेस्टेड है यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 9307965618 पे। 4 अगस्त को संडे है एंड मैं मुंबई जाने वाला हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है मुंबई में आने के लिए या मुझसे मिलने के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट अस अगेन सेम नंबर 9307965618 पे। थर्ड है कि 25 अगस्त को संडे है तो एक दिन का हम लोग ने गायनी एंड ऑब्स्टेटिक्स पे वर्कशॉप रखा है गो होम 2024। अगर आप इंटरेस्टेड है गायनिकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक्स सीखने के लिए तो वर्कशॉप है वो। सो मॉर्निंग से लेकर रात तक रहेगा एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 9307965618 फॉर रजिस्ट्रेशन। लास्ट में विंटर स्कूल दिसंबर में होने वाला, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में, उसमें भी अगर इंटरेस्ट है तो रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड और वो 9307965618 पे आप रजिस्टर करवा सकते हैं। सो नदीम कुरैशी वालेकुम अस्सलाम, बलराम सिंह हाय, योगेश कपूर एंड विवेक राउत गुड इवनिंग, वेलकम टू आदिल बोलता है। पहला क्वेश्चन है पेन इन पेनिस, एनी मेडिसिन? पेन ड्यू टू व्हाट? पेन वेन? जरा कुछ तो मॉडलिटीज होना चाहिए ना। जब वो नॉर्मल साइज में रहा वो टाइम पे ही पेन होते रहा तो देर इज नो ये पैथोलॉजी बिहाइंड इट। सो गिव बेलेडोना 200 3 टाइम्स इन अ डे। पर पेन ऑन इरेक्शन रहा देन गिव स्टेफिसेग्रिया 200 3 डोजेस। कैंथरस भी है पेन इन, कैंथरस भी है, बर्निंग पेन इज देयर। बलराम सिंह ब्लॉग पूछे सर वेरिकोसील ट्रीटमेंट हर होम्योपैथी डॉक्टर करते हैं? वेल वेरिकोसील ट्रीटमेंट तो करते हैं लेकिन उसका रिस्पॉन्स क्या होता है? पेन वेरिकोसील का कम हो जाता है एंड बहुत बार वेरिकोसील के वजह से जो इनफर्टिलिटी होती है तो वो बहुत हद तक मैनेज होती है, बट एज सच वेरिकोसील जा सकता है कि नहीं वो टोटल केस के ऊपर डिपेंडेंट है। नदीम कुरैशी पूछते हैं नेक लिम्फ नोड स्वेलिंग पेशेंट इज ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव, सजेस्ट मेडिसिन। सबसे अच्छा ड्रग है एक्चुअली स्पीकिंग। यू शुड स्टार्ट विथ ट्यूबरकुलिनम 200 एज अ नोसोड एंड देन यू कैन गिव कैलकेरिया आयोड या ब्राइटा आयोड 200 डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर डिजायर एंड एवर्शंस। बट ट्यूबरकुलर lymphadenopathy by itself is a full-fledged disease and it has to be monitored at least for 6 months to a year। तो समूह कोई आते होंगे तो उसके आधारित दवा शिफ्ट हो सकती है। सिर्फ लिम्फेडेनोपैथी सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी है या सबमेंडिबुलर लिम्फेडेनोपैथी होने से कैलकेरिया आयोड दे सकते हैं। इनफैक्ट बहुत लोग पूछते हैं कि होम्योपैथी से ट्यूबरकुलोसिस ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं? हाँ तो है, कर तो सकते हैं। और आजकल तो बहुत सारे लोग जो MDRT यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस से ग्रस्त है वो होम्योपैथी पे शिफ्ट भी करते हैं। लेकिन इतनी बड़ी डिजीज़ को इन्वेस्टिगेट बराबर होना चाहिए एंड लॉन्ग टर्म थेरेपी लगती है। जैसे एलोपैथी में 9 महीने लगती है तो यहाँ पर भी 9 महीने से साल भर लग सकता है। और सिंगल ड्रग नहीं है, हर एक पेशेंट को अलग अलग ड्रग लग सकती है। लिम्फेडेनोपैथी के लिए एक ड्रग भी है और उसका नाम है स्क्रोफिल एंड नोडोसा। स्क्रोफिल एंड नोडोसा सिर्फ अगर लिम्फेडेनोपैथी है तो, फिर पेनलेस है, पेनफुल है, दैट कैन चेंज। विवेक राउत गुरु पूर्णिमा की आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद। अभिषेक तिवारी पूछते हैं सर डाइल्यूशंस को ग्लोब्यूल्स में ले या टंग पे कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है आपकी प्रैक्टिस में? भाई जिसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, डाइल्यूशन डिस्पेंस करना थोड़ा कठिन जाता है तो बेटर वी यूज़ ग्लोब्यूल्स। 6 ग्लोब्यूल्स का एक खुराक होता है। नॉर्मली थियोरेटिकली जो देखा जाए हैनिमेनियन मेथड के तो हार्डली 2 ग्लोब्यूल 10 नंबर इज इनफ, बट इन प्रैक्टिस
we are using 4 to 6 pills of number 20 as one dose. Now RPD का मतलब होता है रेमेडी, पोटेंसी एंड डोज. तो रेमेडी होम्योपैथी के अंदर जो हम लोग, जो तुमने पूछा कि आप क्या करते हैं, तो हम 3 खुराक देते हैं एक दिन के अंदर. बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ अस, हमारे यहाँ इज ए सिंगल मेडिसिन डोज. वी डू नॉट रिपीट, वी डू नॉट रिक्वायर टू रिपीट देम. इसीलिए कोई एक डोज मेडिसिन देने का एक ही दिन के अंदर 3 खुराक दे देते, एंड देन यू वेट एंड वॉच एटलीस्ट फॉर 3 to 6 weeks. बेस्ट वीडियोस पूछते इचिंग इन द हेड आफ्टर गेटिंग वेट इन रेन वाटर. आई गिव रसवेन बट नॉट रिस्पॉन्डिंग. तो आप कौन सी दवा सजेस्ट करते हैं? नेट्रमसेल 200 दे दो. दल का मारा अगर पूरे स्किन पे है तो. डज रॉ गार्लिक डिक्रीज इफेक्ट ऑफ रेमेडी और इज दिस अ मिथ? Not necessarily. If you are taking directly raw garlic immediately after medicine, yes, it may do it. But there is nothing, no working has been done on it, no research activity has been performed on it. ये पहले बरसों से सुने आया है और अपन करते हैं, बिकॉज के गार्लिक है, लहसुन अदरक है, उसमें बास आती है, एंड अपनी मेडिसिन जो है स्ट्रॉन्ग स्मेल के अंदर एंटीडोट होता है, इसलिए किया गया है. कैफीन इंटॉलरेंस है, 20 to 25 बार यूरिन जाना पड़ता है चाय या कॉफ़ी लेने पर, और सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है. कैफीन बाय इटसेल्फ एंटीडोट करना, आई डोंट थिंक ऐसी कोई स्पेसिफिक मेडिसिन अपने पास है. नेवरदिलेस आपका जो कहाँ रहते कहाँ है, जहाँ कॉफ़ी लेना ही पड़ता है. सपोज इफ यू आर नॉट टॉलरेंट विथ कॉफ़ी, आई थिंक इट इज़ बेटर टू अवॉइड इट रादर देन ट्रीट इट. I want to take medicine so that I can take coffee. I don't think it is, unless until you strongly desire coffee. So as it is possible, avoid it. चाय से अगर हो तो थिया, जो खुद चाय से ही होम्योपैथी मेडिसिन बनती है, तो उससे अगर तकलीफ हो तो फिर आप वो थिया दे सकते हैं. बट एज सच, जैसे सर ने कहा, इट्स बेटर टू अवॉइड. जो चीज़ नहीं जमता वो लेके फिर दवा लेना और ठीक करना, वो कोई मतलब नहीं आता. रोहित वर्मा पूछे, सर चिक पर छाई है, कॉर्पोरेट अफेयर क्या उम्र क्या है उसकी, एज क्या है, यू टू अंडरस्टैंड. चीक पर छाई आना जो अपन लेडीज के अंदर होता है, मेलास्मा हो या जिसको अपन सीपिया टाइप ऑफ बटरफ्लाई शेप होता है, तो इट इज़ ए हार्मोनल डिस्टर्बेंस, नथिंग इज पॉसिबल. इट इज़ ए सेनाइल चेंज. तो इफ़ इट इज़ सम डिसीज पर से, क्या टीनिया वर्सिकोलोर है उसको, इफ इट इज़ टीनिया वर्सिकोलोर, तो देन डेफिनेटली थूजा एंड सीपिया आर द 2 रेमेडीज टू बी थॉट ऑफ इन 200 potency once in a week. मितेश एंड मीता, गुड इवनिंग. विवेक राउत, सर शायटिका में कोलोसिन बोथ साइड अच्छा काम करती है क्या? जनरली लेफ्ट साइड ड्रग है, लेफ्ट साइड में तो अच्छा ही काम करती है, बट कभी कभी राइट साइड में जहाँ स्पाज्मोडिक पेन है ना, शूटिंग तो रहता है, बट शूटिंग में स्पाज्मोडिक पेन में साथ में क्रैम्स भी बहुत आते हैं, तो ये कोलोसिन आप दे सकते हैं शायटिका में. सैयद जुबैर, वालेकुम अस्सलाम. प्रेगनेंसी में हेडेक के लिए क्या ले सकते हैं? सिर्फ एक सिम्टम बोलने से नहीं चलता, उसको क्वालिफाई तो करो, उसके एट्रीब्यूट्स तो बताओ, कब बढ़ता है, सुबह दोपहर शाम, कौन सा टाइप ऑफ सेंसेशंस है, क्या कारणवश वो एक्साइट होता है. सिंपली हेडेक के लिए तो एलोपैथिक टाइप ट्रीटमेंट हो जाएगा कि पैरासिटामोल दो या बेलेडोना दो या नक्सोमी का दो. जो हकीकत में इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन होम्योपैथिक वर्किंग, प्लीज़ ट्राई टू डिस्क्राइब, प्लीज़ ट्राई टू क्वालिफाई योर सिम्टम्स विथ एट्रीब्यूट्स. ये एलोपैथिक टाइप ऑफ क्वेश्चन रखोगे तो एलोपैथिक आंसर भी वैसे ही मिलेगा. वेरिकोसिल ट्रीटमेंट परमानेंट नहीं होता होम्योपैथी से? हाँ, नहीं होता है ट्रीटमेंट परमानेंट. ये एक सर्जिकल डिजीज है, हम थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं, बस उतना ही. सर सेनाइल ट्रेमलिंग एनी मेडिसिन? अब बुढ़ापे में ट्रेमलिंग नहीं आएगा तो कब आएगा? ट्रेमलिंग जवानी में है, बचपन में है, तो देयर इज मेडिसिन फॉर दैट. बट सेनाइल ट्रेमलिंग, इफ यू से सेनाइल, वी बिलीव दैट द पर्सन इज 80 years प्लस, और उसके अंदर ट्रेमलिंग उसको रोका नहीं जा सकता. सो
They are limitations of homeopathy. Physiology है वो तो फिर is as good as dissolving the cataract with homeopathy, which is not possible. What constitutional treatment required for cervical spondylosis? Constitutional treatment for cervical spondylosis. First and foremost thing, you have to understand what is cervical spondylosis. Constitution, do you want to cure cervical spondylosis by a remedy? It is not possible at all. You have to understand what is the age, why spondylitis has taken place, what is the maintaining cause behind it. You know cervical spondylosis is a degenerative disorder and it is associated with mental state of disposition. And there is nothing as cure. In homeopathy, one thing you should keep in mind if you are attached to the academy, that treatment and management are distinctly two different things. In homeopathy, we manage patients. Treatment is done by drugs like allopathy. So in cervical spondylosis, medicines alone may not be able to do the job. It is the generalities, the state of disposition, the mental state, simultaneously the maintaining causes. Suppose unfortunately the patient is an IT professional, a software engineer, and he has to be on the laptop or for that matter computer for hours together in AC. Then these maintaining causes are the causes, are exciting factors and maintaining factors. They also have to be looked after. I cannot simply say take bryonia or ferromet. Yes, they are the remedies for the pains for cervical spondylosis, but that they alone will not be able to do the job. Please try to understand that. Better is a proper physiotherapy. Physiotherapy अगर अच्छे से किया है and followed by regular exercises, that actually takes care of your cervical spondylosis. One. And second, cervical spondylosis से ज़्यादा there is something called as chronic fatigue syndrome. आजकल जो देखा जाता है उसके अंदर नेक स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, नेक मसल स्टिफनेस, तो दबाने से बहुत अच्छा लगता है. तो इसके लिए प्रॉपर हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन एंड रेस्ट, ये तीन भी चाहिए along with exercises. Sir, senile trembling, his constitutional medicine is arsenic alb. Age is 70 years but not getting, otherwise patient is very active. अरे भाई, the moment you say it is senile, उसका मतलब वो 70 साल की उम्र हो गया. तो I think what you are talking is that you know what is anatomy and physiology. तो senile का मतलब cerebral degeneration. And if you know physiology, you must know that once the cerebral nerve cells are degenerated, they cannot be recouped back. So these two things keeping in mind, don't please try to treat senile trembling. Try to accommodate that patient with physiotherapy. Try to see that some good amount of exercises are done, and then you should know the limitations and scope of homeopathy. Unfortunately, अपन सभी चीज ट्रीट करना चाहते हैं होम्योपैथी से. God wishing. Edward Pollock Anschutz, in his old and forgotten remedy, says that salvia officinalis takes away senile trembling. Yes, senile trembling, if it is senile trembling after 65, 70 years, they are normal thing. They are physiological degenerative changes. But God wishing, if you have got a good constitutional remedy, for example, suppose income mat is there, then if you give income mat at the age of 50, 55, when there is a trembling like senile trembling, then definitely we may be able to postpone that trembling, definitely we may be able to reduce that trembling, and if it is what we say is that intentional trembling, that means the moment the patient attempts to catch a glass or to write a pen, that time the trembling is there. This trembling can be corrected by adonitricum and gelsemium. But then, if senile type of trembling is taking place after 75 years old, God forbids, please try to know your limitations. Homeopathy may not be able to help as you expect. In case of non-Hodgkin lymphoma, what is the approach in homeopathy? Non-Hodgkin lymphoma and homeopathy. So, how do we categorize these lymphomatous conditions? We categorize them into a tubercular diathesis. Now, keeping aside the word non-Hodgkin's lymphoma, you please try to go into the entire family history. Also try to go into the present state of affairs, the presenting totality. And if, God wishing, we have got certain good symptoms, by that what I mean to say, we have got good physical generals,
We have got good physical, mental particulars, mental journals on which we can rely upon. Then definitely you can select a remedy on those symptoms. We have got number of patients of non-Hodgkin lymphoma and we have managed them. What is more important is forget about the word cure. Even if you are able to keep the patient walkie-talkie, comfortable, his appetite, his daily activities, his mental state and other physical attributes for quite some time, maybe for 10 years, 15 years, 20 years, I think that is a sufficient advantage with homeopathy. Because in allopathy our experience is that once the patient is diagnosed as NHL, that non-Hodgkin lymphoma, his life is restricted to 15 years only, no matter how good treatment is done. But there are patients with us who are with us for the past 15 to 20 years, but they are walkie-talkie. So I think you have to compromise over here. What do we achieve? What do we expect from homeopathy? That is very important. डॉक्टर प्रमोद खानदेशे, गुरु पौर्णिमाचे हार्दिक शुभेच्छा आहे. खानदेशी आशीर्वाद. कसं काय रे? कुठे आहे? येतच नाही तू तो कधी. मोनिका सूर्यवंशी पूछते हैं, हाउ कैन वी मैनेज फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन विद कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच? So forget about, do you know what is constitution? You are treating an acute disease, that is fever. And where is the question of constitution arises here? You must know how to manage an acute patient. An acute patient is managed by the acute totality. And the total number of symptoms presenting at that point of time is the acute totality. So, what do we expect in the drug? The drug will be an acute drug, a drug which will be short-lasting remedy, a drug which will give you the results within hours or within days maximum. This is what we expect from an acute totality. The word constitution, do not please try to misuse this word constitution everywhere, wherever you want. There is no word as constitution in acute totality. You don't take the height and weight of the patient. You don't take the physical generalities and mental generalities. In acute conditions, majority of these symptoms are lacking. The scarcity of the symptoms in the acute condition, that is the skill of the physician. A physician is able to manage an acute case even with 1 or 2 or 3 symptoms only. That is what is acute complaint. We do not get all the symptoms. So where is the question of treating constitutionally? In constitutional treatment, you require the entire case taking, which is very, very difficult to get in acute case. So in acute totality, we get only 1 or 2 or 3 attributes to the main symptoms. Maybe a modality, maybe a causation, maybe a sensation, and select a remedy for that. And Hahnemann के aphorism number 5th edition में aphorism 211 is state of disposition. मतलब जो फिजिशियन बिना हिस्ट्री परसीव कर सकता है पेशेंट को देख के और उसका माहौल देख कर, उसका बिहेवियर देख के, उसको स्टेट ऑफ डिस्पोजिशन बोलते हैं. एक्यूट केसेस के अंदर दिस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. डायबिटीज की वजह से डबल विजन की तकलीफ है. डायबिटीज ठीक है, 6 मंथ से कोई मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ, 3 महीने वाला टेस्ट 5 है, प्लीज हेल्प. तो डबल विजन आपको डायबिटीज की वजह से है ये आप बोल रहे हैं कि आपको बोला गया है एक. और डबल विजन कंटिन्यूसली होता है कि कोई ज़्यादा आँख स्ट्रेन करने पे होता है, दिन में ज़्यादा होता है, रात में ज़्यादा होता है, कुछ तो मोडालिटी चाहिए. डबल विजन के लिए बहुत सारी दवा है हमारे पास, लेकिन आपको किस तरह से ये हो रहा है. डायबिटीज़ को बाजू में रखते हुए ठीक है, चलो आपने बोला HbA1c 5 है, सो दैट मीन्स डायबिटिक एंटायर सिंड्रोम इज़ वेल अंडर कंट्रोल. बट उसका ये मतलब नहीं है कि डबल विजन डायबिटीज़ की वजह से हो. और शायद चश्मा हो सकता है आपका, या कैटरैक्ट आ सकता है, उसके वजह से भी हो सकता है वो. फियर टू बी अलोन, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस. Now, understandingly, fear to be alone and loss of confidence, both of these are very syphilitic expressions. Now, इसके लिए we have to try to understand the patient state. जिसको आप डॉक्टर आदिल ने कहा, aphorism number 211, मास्टर हैनेमन सभी कुछ बोलने के बाद, और in 294 aphorisms,
सभी कुछ बताने के बाद drug should be selected on uncommon peculiar characteristics. Somewhere we have said the drug is selected on the mental generals, and all said and done, he had finally came to a conclusion that the drugs have to be selected on the state of disposition. He has described the physical state and the mental state. Now, if the patient is in acute condition, the state of disposition, मतलब कौन सी स्थिति में पेशेंट है. I remember, if I am permitted to answer, I remember a case of Catherine Coulter. She was asked to go and see an acute patient. She entered the room and the patient was lying flat on the bed. He was a known case of bronchial asthma. He was lying flat on the bed and the pillow was down on the floor. And there was offensiveness there. She immediately came out. Hardly she stood there only for 2 minutes or so. The entire case taking, what she must have done was only in 2 minutes. And this very acute physician's observation, when she came out, she gave Soranum 1M. Now you remember, my friends, Soranum 1M, 1 dose was given to her, to him, that patient. And what were the modalities? The modalities is that known case of bronchial asthma, lying flat on the bed relieves him, and the offensiveness all accounted together also. So this is what is known as physician's observation, and this is what you require in acute totality, and this is what you may say is a constitutional treatment for the acute. But I am sorry to say, please do not use the word constitutional treatment everywhere. In acute condition, we only treat an acute totality, because there is no question of curing the patient as a whole. We are trying to manage a particular symptom syndrome in an acute totality. The next question is from Saurav Chatterjee. One person having back pain that radiates to the left leg. So he's got, he or she must be having sciatica, and one of the very important drugs for left-sided sciatica is Rustox. What do you mean by hydrogenate constitution? See, if you have read the book on writings of Kanjilal, Dr. Kanjilal has explained in detail different types of constitutions. Fortunately, I was there at the time when we were assembling his writings. Of course, that time we could not complete it. Nevertheless, it was printed after I returned back from Calcutta to Nagpur. But I distinctly remember to discuss about hydrogenate constitution with Dr. Kanjilal sir. Hydrogenate means you require water. A constitution which is related with water in any form. My dear friends, try to understand, I am using the word any form. That means if the complaints are aggravated near water, the complaints aggravated by eating foods with water, the complaints aggravated with the food with along with those fruits which are grown in water, the complaints aggravated in wet weather, means rains, water and complaints. This is known as hydrogenate constitution, and that is intimately related with psychotic state. So majority of the cases of hydrogenate constitution are psychotic remedies, because psychosis and water, they go simultaneously together. And the last question for today is, please tell us about the new book of miasm. अभी आपके पास पुराना वाला बुक पर्पल कलर का था, अभी हमारा ग्रीन कलर का बुक है ना, टेक्स्ट बुक ऑफ miasm. So what new additions we have done in textbook of miasm? Now, you know, with time passing by, I had emphasized the fact that tubercular miasm, Master Hahnemann described only 3 miasms: Sora, syphilis and psychosis. And I can again use the word with inverted commas. Unfortunately, Master could not apply his own theory of miasms in his practice because it was quite late. Nevertheless, we are fortunate that we had authorities like Allen, Burnett, and last but not the least, which I will not hesitate to name, is Kanjilal. All of these authors have used this concept and
came down to today's level, and that is, we say that today we are not getting patients of pure SORA, pure syphilis and pure psychosis. We are getting patients of tubercular miasm. By that, what I described is blended miasm. Master Hahnemann prognosticated this well in his time when he was writing in Organon, in his aphorism number 206, where he had described when a venereal miasm gets complicated, when the SORA gets complicated with venereal miasm, and or it is complicated with fig warts. So I think it was in his mind that a day is going to come when we are going to get blended miasmatic symptomatology. So what you are asking about the new book, we have added something more on the tubercular miasm. Then we have added role of microorganisms and microbes, correlation of microbes and miasms, जो पहले नहीं था. Then certain diseases, how do you understand them miasmatically, like cirrhosis of liver, rheumatoid arthritis, cancers, atherosclerosis, nephrotic syndrome, allergies, and then drugs. So many drugs, सभी में लिखा है, जैसे for example Thuja is antipsychotic and so on and so forth. But उसमें what is that psychosis, what part, वो पूरा यहाँ पर हमने explain किया है. Vaccinations जो हमारे व्यू पॉइंट है उसको ये किया है, explain किया है. So this in short is added new to as compared to the old book. So ladies and gentlemen, thank you so much for joining. अगले थर्सडे फिर मिलेंगे, और अगर टाइम नहीं रहा थर्सडे तो फिर सैटरडे मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर. इजाज़त दीजिए. गुड नाइट, टेक केयर. Thank you very much.